Assalamu alaikum dear students. I am Manzoorul Haq Masoodi, teacher UPS Ananwan. Hope you will be fine and healthy at your home. As you know, our topic is Achilles. Yesterday we have discussed about Achilles, a Greek hero. So to proceed forward, we will read the another para of the lesson. That is page number 85. Let us read now. So listen carefully. When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man, stopped, took off his ridiculous hat, and swept us a low bow. He smiled at us, put on his hat again, raised his hands, and waggled his long bony fingers at me. I asked him if he had been to some festa. He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips, and played a lilting tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back the way he had come. He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. I suddenly realized that he must be unable to speak. So, standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him, and he replied with a clever pantomime. I asked what the rose beetle were for. He held his hand out to denote small boys, took one of the lengths of cotton from which a beetle hung, and whirled it rapidly around the head, around his head. Immediately, the insect came to life and started on his planet-like circling. Pointing up at the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. Then he uh, whirled his beetles around his head so that they all started to buzz quickly. Okay. When he saw Roger, my pet dog, जब उसने मुझे और मेरे पालतू कुत्ते रोजर को देखा, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat, and swept us a low bow. तो उसने क्या किया, वो रुक गया, अपनी बुद्धि सी टोपी उतारी और झुककर हमारा इस्तकबाल किया. ओके. ही स्माइल्ड एट अस. ही स्माइल्ड, वो हमें देखकर मुस्कुराया. एंड वैगल्ड हिज लॉन्ग बोनी फिंगर्स एट मी. वो मुस्कुराया, दोबारा अपनी टोपी पहनी. आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही हैड बीन टू सम फेस्टा मीन्स कोई जश्न. मैंने उससे पूछा कि क्या वो कभी किसी जश्न में गया है. ही नॉडेड हिज हेड विगरसली. उसने जोर से अपना सर हिलाया. रेज्ड हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड प्लेड ए लिल्टिंग ट्यून ऑन इट. उसने बांसुरी को अपने होंठों तक उठाया और उस पर झूमती हुई एक धुन बजाई. एंड देन स्टॉप्ड, और फिर रुक गया. एंड जर्कड हिज थंब ओवर हिज शोल्डर, और उसने अपने कंधे के ऊपर अपना अंगूठा झटका. पॉइंटिंग बैक द वे ही हैड कम,
पीछे उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए जहाँ से वो आया था। ही स्माइल्ड, ही वो मुस्कुराया, एंड रब्ड हिज फोर फिंगर मीन्स जो दूसरी यानी उस जिसको हम शहादत की उंगली बोलते हैं, और एंड थम टुगेदर, उसने अपनी शहादत की उंगली और अपने अंगूठे को एक साथ रगड़ा, एक्सप्रेसिंग दैट ही वांटेड मनी, ये जाहिर करते हुए कि वो पैसे चाहता था। I suddenly realized that he must be unable to speak. मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे एहसास हुआ कि ये बोल नहीं सकता। सो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ रोड, इसलिए बीच सड़क में खड़े खड़े आई कैरीड ए कन्वर्सेशन विद हिम, मैंने उस कन्वर्सेशन विद हिम एंड रिप्लाइड विद अ क्लेवर पेंटोमाइम, तो मैंने ये गुफ्तगू जारी रखी और उसने होशियारी से इशारों से यानी इशारों से मुझे बोला। आई आस्क्ड व्हाट द रोज बीटल्स वर फॉर, मैंने उससे पूछा कि गुलाबी जो भंवरे किस चीज़ के लिए होते हैं। ही हेल्ड हिज हैंड, उसने he held his hand out to denote small boys, उसने छोटे लड़कों को इतला देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। took one of the lengths of cotton from which a beetle hung and whirled it rapidly round his head, राउंड बढ़ाया, सूत के थानों में से एक थान निकाला जिसमें से एक भंवर लटक रहा था, और फिर उसने उसे तेजी से अपने सर के गिर्द घुमाया। इमीडिएटली द इंसेक्ट केम टू लाइफ एंड स्टार्टेड ऑन इट्स प्लानेट लाइट सर्कलिंग, फौरन ही वो कीड़ा जैसे जिंदा हुआ था और सयारों की जैसे अपनी गर्दिश करना शुरू कर दी। Pointing up to the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. उसने अपनी बाहें pointing up to the sky, उसने इस आसमान की तरफ इशारा करते हुए he stretched his arms and gave a deep nasal, और गहरी बम्बाहट दी। Then he whirled his beetles around his head so that they all started to buzz quickly. फिर उसने अपने जो भंवरे थे उनको अपने सर के गिर्द घुमाया ताकि वो सभी जल्दी से बम्बाहट करने लगें। आज इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।